मुझे कहीं पे भी रोना आ सकता है और किसी भी चीज पे भी रोना आ सकता है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं। और लेकिन हाँ, एक एक्टिंग के थ्रू आई गेट दैट फ्रीडम टू क्राई एज मच एज आई वांट टू। रोने दो मुझे, रोने दो। हाँ, फिर रोने दो, हंसने दो, जो भी करना है करने दो यार। मुझे ना रील बहुत ट्रेंडिंग है, मैं रोऊं गाऊं हंसूं घूमूं फिरूं तुम्हें क्या। रेडियो नशा। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। It's one of my favorite dialogues, and when I heard Kajol say it, I said, "Wow, man, this couldn't get better." Salaam Venky के promotions के लिए I'm sitting, of course, with Kajol and with Vishal. Thank you so much, Radio Nasha, for welcome back. Thank you so much. Glad to be here. देखो ये जो मैंने टी-शर्ट पहनी है, देखो ये जो मैंने टी-शर्ट पहनी है, इसमें लिखा है काजोल इज द किलर। क्यों लिखा है ये मैंने मेरी टी-शर्ट पे? विशाल, प्लीज क्वेश्चन। आप बहुत चाहते हो ना कि मेरी बेइज्जती हो जाए? बहुत चाहती है। मुझे सच में नहीं पता। Okay, सॉरी, how आप ही cute. बता दो। Okay, no, it's okay because ये सब माफ है तुम्हारे लिए because you play her son. Oh, like wow. ऐसे मतलब किसी और को नहीं मिलता ये। But talk to me, Vishal. I'm going to start with you. What does it mean to play? And you've played other characters in the past. You've played, somebody who's very scary against Rani at one point. तो तुम क्या favorite हो मुखर्जी से? मुझे ऐसा लगता है कि मुखर्जी फैमिली से कोई तो कनेक्शन है मेरा। मैंने एक एल्बम पिछले किया जन्म था, वो भी आरको मुखर्जी के साथ, तो वहाँ पे भी मुखर्जी तो है। आई थिंक कुछ कनेक्शन है, बट बहुत ग्रेट फीलिंग है। ये बहुत ग्रेट फीलिंग है, दोनों ही एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ जो बहुत बड़े नाम है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत मजा आता है, एकदम इजी माहौल होता है आपका सेट पे। तो यस, She's amazing. She's so amazing. Kajol is the killer. Kajol is killer. Is the killer हमारा. It's a little private joke now. Can you believe it? Can you believe it? वो भी प्रीमियर करने के बाद। ऐसे बदतमीज लोग हैं Oh वो my भी। God. I am so happy कि हमें मौका मिल रहा है to see you on the screen. Okay, सलाम वेंकी के Thank साथ। you. I know that this is a movie that is about a condition जिसके बारे में शायद हमको नहीं पता। And I also know कि जब ये फिल्म आपके पास आई थी, first you said कि मैं नहीं करना चाहूँगी, and then you took a little while before you said yes. Why was the initial hesitation? The initial hesitation was because of the subject matter, of course. Also, as a parent, माँ बनने के बाद, I think when you become a parent, आप हमेशा आपकी सबसे बड़ी फियर यही होती है कि हाय कुछ मेरे बच्चे को ना हो जाए। एक खरोच भी आती है, बुखार भी हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप बीच रात में भाग रहे हो, डॉक्टर को फोन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। There are so many nights that I have spent, I remember sitting upright because my daughter could not breathe. उसको सांस नहीं आ रही थी, तो I've sat with her and sat up with her whole night. And I've done that, and I didn't think that I've done something fantastic or whatever, but I know the feeling as a parent that itni choti cheez pe bhi, it's not, compared to this, it's very small. And she got better the next day, but still, I mean, it's something that you don't want to face. और तो मैंने तो मतलब बहुत स्वीटली मैंने रेवती को बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स देके ना कर दी। मैंने बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स दी, मैंने 5 मिनट के लिए उनको बहुत बोला कि you're the best and I love you, and I really genuinely mean it. She is the best, and I do genuinely love her, and I think she's a fabulous actor, she's a fabulous director. I've seen her first film as well. I knew that she would make a fantastic film, but I'm not doing it. Classic Kajol. But I'm not doing it. But I heard the script after that. I did hear the script, and I loved the script. I loved the way it had been written. I thought it had the right balance of what you want to say, at the same time not making it preachy. Correct. You're not making it like, oh, ये तो मतलब सुनना पड़ेगा और घंटी बज रही है मंदिर में। तो and I knew that रेवती was the kind of director जो ऐसे subject को बहुत ही अच्छी तरह से balance कर देगी। So I was like, okay, Corra Bana like संभाल लोगे ना? So she was like, yeah, don't worry, I will take care of you. So I was like, okay, done. I love it. I'm going to take this to you next. ये तो चलो रहने दो। हाँ। But क्यों? ये रहने दो क्यों? हाँ, क्यों? Take a wild guess कि ये लाइन कहाँ से है काजोल इज द किलर? मतलब आई थिंक कोई फिल्म से कुछ ऐसा मैम ने कैरेक्टर किया होगा। Yes. बहुत कमाल की फिल्म है, it's called गुप्त।
जिसके 25 साल इस साल पूरे हुए और हमने बहुत सेलिब्रेट किया. She was there. We showed the movie. And then we printed these t-shirts. I wore it that day. I still not taken it out. I saw you in between. क्यों तुम्हारे गली के बाहर बगले के बाहर में घूम रही बगले के बाहर थी? हाँ, ऐसे walk पे. जिंदगी लंबी होनी चाहिए, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए. ये लाइन तुम्हारी जिंदगी में इस फिल्म की वजह से आया, लेकिन हमारी जिंदगियों में पहले आया था एक फिल्म की वजह से जिसका नाम था आनंद. वो फिल्म देखी? वो फिल्म भी मैंने नहीं देखी. Very good. Thank you. You are the best. Thank you तो so much. आंखों की वजह से कास्ट किया है तुमको. एक्टिंग तो करता नहीं मैं. आंखें अच्छी थी इसलिए कास्ट किया. No, but you guys look so good. As mother and son. You know, it's unlikely to find that likeness. और जब मिल जाए तो एक बोनस होता है ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. I think the casting was done bang on. और मैं इतना भी कहूंगी कि जब पहले दिन हम मिले थे, हम we met on the sets the first day and he was lying down in bed in his uniform, जो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म था. हम लोग यहाँ पे मिले थे व्हील चेयर पे. जो फर्स्ट रिएक्शन आता है ना, जो व्हील चेयर वो वाला. लोनावला. I forgot about that. नहीं, but this is a better story. We will change. Since ये कहानी change हो गई है ना, गलत है, मिर्ची गलत है. मसाला कहानी जो होती है ना, मिर्ची मसाला तड़का लगा के बताते हैं हमेशा. तो ये कहानी शुरू होती है. हॉस्पिटल. No, I think the first time I met him, for sure, wherever it was, I don't remember. But I remember thinking to myself that he really has taken Venky and made it him. He is channeling Venky. He is not playing Venky. He is channeling Venky. And I remember thinking when he was on the hospital bed, I don't know when that day came. मेरी कहानी डिस्ट्रॉय कर दी ना. तू देख ले, इंटरव्यू खत्म होने तक. I remember thinking when he was actually lying down in that hospital bed, and there were so many moments in this film that जब आपको really as a mother you think that, you know, you get like goosebumps and you're thinking, oof, you know, you get that feeling like you're actually facing this situation in your life. And I remember thinking, my God, he is Venky. I could not think of anybody else playing this character. It was like कभी-कभी लगता है ना, you know, maybe somebody else could have played it. अभी इस इंटरव्यू के बाद मैं चेंज करूंगी अपना. You know what I love also is the fact that इस film में you're not treating people who are differently able like they need more sympathy. Absolutely. Because Venky का जो किरदार है, and I'm assuming that Venky तुम्हारा नाम है, right? वेंकी में एक स्वैग है भाई. हाँ, वो और हाँ. उसकी मॉम के बीच में जो बातें होती हैं, I love the way that is treated. ये रिफ्रेशिंग ट्रीटमेंट है. करेक्ट. आई थिंक सुजाता भी ऐसा फील नहीं करती होगी कि तू बहुत अलग है दूसरों से. वो उन्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कोई नॉर्मल मदर नॉर्मल चाइल्ड को करते होंगे. और जैसे डिफरेंटली एबल्ड. और पता है मुझे, आई थिंक रेवती मैम ने कहा है कि जो भी ऐसे पर्सन होता है ना, उन्हें ऐसे नाम सुनना भी पसंद नहीं है कि आप स्पेशल चाइल्ड. ऐसा उन्हें समझ में नहीं आता. उन्हें पता है हमारी रियलिटी क्या है. हाँ, हम नहीं देख पाते तो हमें आप जैसे जिस वर्ड में आप बुलाना चाहो बुलाओ. कोई ऐसी उस तरीके की सिंपैथी की उन्हें जरूरत नहीं होती. उन्हें भी बहुत पसंद है जब उन्हें भी इक्वली जैसे नॉर्मल लोगों को ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट किया जाए. आपने थोड़ा समझा इस बीमारी के बारे में. हाँ जी. मेरे लिसनर्स को क्या बताएंगे? बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस अगर बढ़ानी हो फिल्म तक पहुंचने तक, आई डोंट थिंक पीपल नो अबाउट दिस. क्या ये कॉमन है? ये जरा I'll take over for that. Yeah, for this yeah, thing, yeah, बिल्कुल. yeah, तो muscular dystrophy is common in India. और muscular dystrophy जो होती है उसमें आपके जो मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करने बंद हो जाते हैं. तो there is lots of levels of muscular dystrophy, but इस लड़के को जो muscular dystrophy थी, it was called Duchenne muscular dystrophy, और this condition is usually fatal. तो जो बच्चों को ये कंडीशन पे डायग्नोज किया जाता है वो 4 या 5 साल की उम्र में डायग्नोज किया जाता है, एंड दे डोंट लिव पास्ट 14-15 साल में. फिर they cannot survive longer than that. But Venky lived till he was 25. और उनकी कहानी अगर आप सुनो, the reason that he lived was because his mother gave him something to fight for every day. And whatever he wanted, जो भी उसको चाहिए था, उसकी माँ ने उस हर कोशिश की उसको देने के लिए. क्यों? and इसीलिए उसको सिखाया सपने देखने के लिए.
So there's a beautiful line in the film where she turns around and she says, he has to have something to fight for. He has to have something to fight for. I've always taught him all my life to fight for something that he wants. And if he doesn't have a challenge in front of him, what will he do? And I thought that was amazing. That was amazing. So there are lots of lines like this in the film. और सुजाता का जो किरदार है, मैं सुजाता जी से एक्चुअली मिली हूँ, और सुजाता जी का जो किरदार है रियल लाइफ में भी जो आप मिलो उनसे, तो शी इज अ very simple person, but I think Revati ma'am put it the best way. She says, sometimes the simplest people are the bravest. और उनमें जो मतलब इतनी सिंप्लिसिटी है कि बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ अपना गोल और अपना यू हैव टू डू दिस, ठीक है चाहिए चलो, वी आर गोइंग टू गो एंड गेट इट. देयर इज नो जो स्पीड ब्रेकर है वो दिखता ही नहीं है, पेड़ है, माउंटेन है, जो भी है उसको उसके ऊपर नीचे जहां से भी जाना है जाएंगे, लेकिन उस दूसरी तरफ पहुंचेंगे ही. तो एंड शी इज नॉट हर उसका जो किरदार है, इट्स नॉट बहुत मोनोलॉग किरदार, और it's not that kind of a character. It's not a loud character. It's not an obvious character. There is just this very quiet steel determination, and there is just her love for the boy. So I really hope that this I hope कि इस फिल्म के through लोगों को इसके बारे में पता चले, or that they can understand that that you can make your life better. Yeah. When I do interviews, अक्सर होता है that we speak to people who are not as privileged as we are. Yes. या उनकी जो physical state होती है हम जितनी मिलती नहीं है. And I'm a complete emo wreck. मतलब मैं तो रेडियो पे रोने लगती हूँ. As an actor, are you an emo wreck as well? मतलब क्या आपको भी रोना आता है? And how do you get out of that? As an actor, मुझे जब रोना आता है तो मैं वेट करती हूँ कि कैमरा ऑन हो जाए. Set पे at least. Off set, off screen, yes, I am a sap. Like my daughter calls me a sap. So मेरी बेटी मुझे, she's like, Mom, so you're a sap. Just stop. That's her thing for me. Or my son also, he's like, Mom, bas itna hi. I'm not telling you, Mom. I'm not telling you because you start crying and I don't want you to cry. It's a stupid thing. Or if he'll call me up and he's like, Mama, I've fallen down. Mom, I'm telling you now, only take a deep breath. It's okay. So yes, I am a sap in real life. मुझे कहीं पे भी रोना आ सकता है, और किसी भी चीज पे भी रोना आ सकता है. अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं, और लेकिन हाँ, एक एक्टिंग के थ्रू आई गेट दैट फ्रीडम टू क्राई एज मच एज आई वांट टू. रोने दो मुझे, रोने दो. हाँ, फिर रोने दो, हंसने दो, जो भी करना है करने दो यार. मुझे ना रील बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है. मैं रोऊं, गाऊं, हंसूं, घूमूं, फिरूं, तुम्हें क्या? The fans of Fana went crazy when they saw Amir in the trailer. Yeah. मतलब ये भी हुआ है. So उन fans के लिए कहते हैं. मैं कहूँगी कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है. आपका टेस्ट बहुत अच्छा है. आप मतलब कितने सालों से इतना अच्छा टेस्ट रखते आ रहे हैं. But was that pairing, Fana was the reason why the two of you became friends, or पहले से? Amir and me met at the time of Ishq, but we didn't spend a lot of time together because he was paired opposite Juhi. We didn't really have too many scenes together. I think we had maybe one, maximum 2 scenes together or something like that. So there wasn't really that much of time that we spent together on set. And so it was more that when we did Fana, that we actually got to sit and talk more or whatever. And he's a fabulous actor, and I respect him immensely, because I always say this. I think the one thing that Amir has kept for himself is the fact that he has not let himself get stylized. हर चीज में आप आमिर खान से क्या एक्सपेक्ट करते हो? You expect good films from him. You expect great characters from him. You expect कि when he feels about his films, और एक पिक्चर करेंगे 5 साल में, लेकिन whatever film he makes, he's पूरी जी जान लगा के पूरी तरह से he will do this film. So, and that's the thing that you expect from him, and I find it amazing that even on Salaam Venky's sets,
and it was he's still putting his 100%, 200% on set in every scene, in every shot, and hats off to that. Really, hats off to that. It's amazing because He's not taking it for granted No, and at all. And I love the fact that वो trailer में है. You know, because you know sometimes you go watch the film and they're like, oh my god, that's a surprise. I love it because you know what this means is that जितने भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हैं वो चाहते हैं कि इस फिल्म के साथ जुड़ें. बिल्कुल, बिल्कुल. Radio Nasha.